Okay, so next we see here कि parliamentary panel or criminal law bill leaves the decision on death penalty to the center. So when we talk about death penalty या capital punishment भी हम इसको बोलते हैं, so this would be incorporated basically इस पे final decision अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया है निकल के. So India has in the past voted against United Nations General Assembly's draft resolution on abolition of the death penalty. So basically लाइक यूनिवर्सली या जनरली हम नहीं इसको ओवरऑल जनरलाइज करना चाहते कि डेथ पेनल्टी होनी नहीं चाहिए. रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में एज पर जो इंडिया का स्टैंड है, वी सपोर्ट कि डेथ पेनल्टी शुड बी देयर. सो वी आर नॉट लाइक supporting complete ban or abolition of death penalty. So this is one aspect. And when we talk about the National Law University's Delhi's annual statistics report 2022, so this was published in 2022 December. So it shows that as many as 539 prisoners they had been on death row in India, and this was highest since at least 2016. So basically यहाँ से भी क्या हमें कुछ as an like indicator मिल रहा है कि जो heinous crimes हैं, whether their number is also increasing, because the number of death penalties they've been given that has also increased and it is at the highest since 2016. So this is one aspect. And क्या हम और क्या measures ले सकते हैं in order to ensure कि heinous crimes के जो numbers हैं that should come down, या क्या कोई और alternative हो सकता है to death penalty or not? Then और मतलब कि यहाँ पे एक ये चीज भी है कि डेथ पेनल्टी क्या एज अ डेटरेंट क्या वो मैसेज जाता है सोसाइटी में जब हम डेथ पेनल्टी अनाउंस कर रहे हैं या पर्सन इज बीइंग हैंग्ड? I have a very different opinion regarding that. The death penalty is very important for the society because it acts as a deterrent to the forms of terrorism where people are killing at a larger rate or for the any heinous crimes. But I think for crimes like mob lynching or other areas, then it can be life imprisonment. अगर कसाब को रखते हैं सामने में एग्जाम्पल, तो डेथ पेनल्टी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए. लेकिन अगर मॉब लिंचिंग है तो आई थिंक दोनों का अब मैटर जो प्रोपोर्शनलिटी का जो रेशियो होता है कि प्रोपोर्शनल द पेनल्टी शुड बी प्रोपोर्शनल टू द क्राइम कमिटेड, तो उसके हिसाब से होना चाहिए. आई थिंक डेथ पेनल्टी होना चाहिए, लेकिन इट शुड बी यूज्ड ओनली फॉर द हीनियस और टेररिज्म रिलेटेड क्राइम. नॉट टेररिज्म लाइक कि वो टेररिज्म के अंडर में फंसा है, यूआईपीआर लगा है उसके ऊपर, उस पर ऐसे नहीं. अगर प्रूफ हुआ है कि वो बहुत लोग को मारे हैं या फिर वो किल किए किसी को भी, तो वैसे कर सकते हैं. नहीं तो फिर कोई भी कर सकता है ना, फिर तो रहना ही है यहाँ इंडिया में, तो वो फिर डेटर नहीं होगा. ठीक है. नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो डेथ पेनल्टी है हम इसको मतलब थोड़ा जनरलाइज ना ही करें, क्योंकि डेथ पेनल्टी बेसिकली डिपेंड्स ऑन द जुडिशियल प्रोसीडेंस जो एक प्रॉपर प्रोसीजरल मैकेनिज्म के तहत तय होती है. तो वो हटानी चाहिए, लगानी चाहिए. आई थिंक मतलब इट इज अ मैटर ऑफ गवर्नमेंट एंड मैटर ऑफ द जुडिशरी एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट, तो उसके हिसाब से ही होता है. तो इसमें हम थोड़ा अपना थोड़ा जनरलाइजेशन से थोड़ा बचना चाहिए. एंड हियर नहीं, इसमें मैंने बोला, इसमें मैंने मेरा अपना ओपिनियन है इसमें. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव ओपिनियन. So here we see कि even domain experts they are also suggesting कि rarest of rare case जो doctrine है that should be defined in more objective terms if the death penalty has to be retained also. So मतलब this needs to be clearly defined. यहाँ पे कोई ambiguity नहीं हो सकती है. And apart from so this is the idea. और बाकी हम इसको आगे लेंगे as we have मानसी more. ऊपर ले सकते हैं, ऊपर में क्विज एक है, तो इंटरेस्टिंग क्विज है. This one. हाँ हाँ, Children's Day राइट साइड में, 14 राइट साइड में, November. प्रीवियस क्विज वाला में. हाँ, क्योंकि आज का क्विज तो मतलब इम्पोर्टेंट ये वाला, इसी में ये नीचे. बॉक्स कह रहे हो क्या? नहीं नहीं, नीचे. हाँ यही तो है. क्विज एंड आंसर रिलेटेड टू प्रीवियस डेली क्विज. द हार्मोन इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस दिस हार्मोन कॉजेज टाइप 1 डायबिटीज. ये इंसुलिन. हाँ, तो इसी का हाँ, तो इंसुलिन हो गया. उसके बाद फिर सेकंड में वर्ल्ड डायबिटीज डे का लोगो ब्लू सर्कल. द टर्म मीन्स इंक्रीज फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन, हाइपरग्लाइसीमिया.
ठीक है। एड्रेस का कितना परसेंटेज है? 10.5%। लोगो ऑफ द कंपनी इंटरनेशनल डायबिटीज फाउंडेशन, जरूरत नहीं है थीम हो इसका। गया एक्सेस टू डायबिटीज केयर। यस। ओके। हाँ जी, आप थोड़ा स्क्रीन का फोन बढ़ा देंगे, मतलब बहुत ही छोटा दिखता है ये। फोन में कर रहे हो ना आप? ठीक है। हाँ, नहीं नहीं, इट इज ऑन लैपटॉप ओनली आप। नहीं अब तो फुल स्क्रीन पे है। ठीक है, हाँ फुल ठीक है स्क्रीन ठीक से है। ऊपर नहीं कर सकते ना, फिर स्क्रॉल करने में दिक्कत है। ओके, सो वी सी आर्मी में जब बात करते हैं तो आर्मी होल्ड्स द स्टडी टू एड्रेस फर्स्टली सुसाइड्स of the armed personals and fratricides in force. So as part of the measures, so हम army reforms की अगर हम बात करें या defense reforms की हम बात करें, so this is an important aspect when we talk about basically, you know, हम बात करते हैं in the context of the food, the quality of food that is provided to them, and basically जो basic infrastructure की availability है in which basically the armed personals they are living. So वो एक part of the aspect हो गया, and suicides is another aspect. So as part of the measures to address stress and psychological issues and reduce the number of suicides and fratricides in the force, so army have launched a study, and this was in collaboration with the Defense Institute of Psychological Research to assess the mental health of the troops and their families also. Well, the mental health of the families also impacts you know the mental health of the armed personals. So इसके regarding pilot project is also being undertaken, and if we talk about the measures undertaken regularly in this regard, is basically obviously mental health. Now it should be made a part of their training also, and religious teachers counselor courses, basically this is also as a relief measure for their mental health, for the mental balance. So this is being undertaken by the army, and it is also employing the civilian counselors in all the major military stations to address mental well-being of all the ranks. So these are certain, you know, direct steps which are being taken by Indian Army. So United Nations फिर से highlight हुई चीज कि world is severely off track to limit the planet heating emissions. So we are having the target, India की specifically बात करें zero emissions target by 2070, but global level पे we need to have all the countries on the same page in this regard. जो again the proportionate emissions या contributions to the emissions हैं, countries they need to take those measures in that proportion only, तभी हम you know impact देख सकते हैं after a certain point of time also. Otherwise things are जिस तरीके से these things are going forward, we are seeing कि after a point of time they would become irreversible. So तब तो बिल्कुल ही कुछ नहीं हो पाएगा. So world is failing to get a grip on the climate crisis. This has been highlighted with the UN Secretary General Anthony Guterres warning countries were not acting fast enough to avoid the climate catastrophe. So every fraction of degree matters. जब तक ये नहीं समझ में आएगा, the countries basically wouldn't be doing what is actually required. So we see UN found that combined climate plans from nearly 200 nations, they would put the world on a path for 2030 carbon emissions just 2% below 2019 levels. ये तभी possible है जब 200 nations are working on this. तब भी सिर्फ 2% तक ही हमें mitigation वाला impact देखने को मिलेगा. And Paris deal target जो है that is of limiting it by 1.5 degrees Celsius of the pre-industrial era. So YouTube takes aim at AI generated imposters. So it will soon allow the users to request artificial intelligence created imposters to be removed from the platform, and it will require labels on videos featuring realistic looking
synthetic content. So okay, इसको हम synthetic content भी basically term use कर सकते हैं in the answers. And new rules have been issued regarding this, which aim at AI generated video material. It will go into force in coming months. So basically, AI, so jo even videos being generated, we are seeing, like, suppose there is a human, and AI ke through we can like type the words, and that can turn into a video or audio, and the person can speak. So वो एक तरीके से synthetic content हो गया. So basically, we need to regulate it so as we are not promoting any kind of scam or misinformation on social media. And deep fakes हम देख चुके हैं, how it can falsely depict people appearing in pornography as well. So YouTube ने basically guidelines issue किए in this regard. So India can be an alternative to China in manufacturing. So World Manufacturing Hub के context में China Plus One strategy, that is one of the opportunities that is there in front of India. Global manufacturing hub and integration with the global supply chains as well. So choice has to be made whether to rely on local consumption or becoming a global manufacturing hub via openness. So क्या मतलब इंडिया इन दोनों चीजों को साथ में लेके नहीं चल सकते? तो डेफिनेटली वी कैन टेक दिस थिंग्स टुगेदर ऑल्सो, मतलब लोकल कंजम्पशन, एंड आप बेसिकली लोकल जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, इतनी कैपेसिटी के लिए हमें बेसिकली इन्वेस्टमेंट्स बहुत लार्जर स्केल पे चाहिएंगी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्रीज एंड जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है. सो लोकल कंजम्पशन प्लस वी कैन ऑल्सो गो फॉर एक्सपोर्ट्स ऑल्सो. सो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, दोनों तरीके से वी कैन अचीव दीज टू थिंग्स, बट उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग और कितना हमें इन्वेस्टमेंट चाहिएगा वो थोड़ा लार्जर स्केल हो जाएगा. तो यहाँ भी चीज़ों की बात की गई है, इन्वेस्टमेंट्स. And so 3 things have been highlighted here. We see first, normalization of the free trades, particularly जो ocean freights है, क्योंकि major जो हमारा trade होता है that is through ocean, sea trade. Second is the impact of rising interest rates across the major economies. So this is all interrelated also. So ये एक global और external factor हो गया. And third is the e-commerce transition that we are seeing. So that is fully intact also. So like cyber fraud भी increase हो सकते हैं. तो basically multiple areas है, but 3 broader areas है ये जो हमें help कर सकते हैं becoming a global manufacturing hub. Okay, Ashik, now we can take Indian Express newspaper. Now coming to the Indian Express newspaper. Cyprus ignore sanction to power Kremlin's financial machine. This we have to take up later on in a हाँ. detailed video. प्रवेश, what is Foxconn? हम ऐसा नाम सुनते हैं इसका. दोबारा बोलना उसे, फोक्सकॉन. हाँ, Foxconn. No, I am not aware of it. It is basically one of the largest manufacturing of the electronics and silicon wafers, that is semiconductor etc. based in Taiwan. तो ये पता होना चाहिए. Foxconn industry. Approximately annual revenue है $214 billion. This is annual. तो ये हमने बात किए थे. Secrecy and no tax reason why Indian look at Cyprus. This is also same thing we have to take up later.
center considers seeking access to anonymized data of the big tech firms. Basically, the problem is in India is that most of the big tech firms are based in Norway or US or in UK, etc. So whenever Indian government sends request for the collection of data, they simply deny it. So basically, new data, digital data bill is part of the comprehensive legal framework, which will include the measures taken by the center to access the anonymity data of the big tech firm. तो इसी पे बात चल रहा है. And for this, the Facebook, Google, Amazon have to share the personal data. तो इसमें दो एरियाज है, एक पर्सनल एंड नॉन पर्सनल डेटा होता है. जैसे anonymous data are two types, personal data and non-personal data. And non-personal data means that it does not have any identification number or identifiable information about that. It may include the demography, weather, etc. Whereas personal data is very specific to the person. That is उसका sex क्या है, age क्या है, कहाँ से है, address, etc. So we have to know the difference between the non-personal and personal data. So basically, in the rescue operation that is being done in Uttar Kashi, the trenchless rescue technique is being used now. So what is trenchless technique? It is putting together passages made of mild steel pipes right through the debris so the men can crawl out. ये बात की है मानसिक कल कि एक alternative tunnel होना चाहिए पतला सा. So I think they are making that कि mild steel pipes they are putting through the debris so that each man can crawl out. तो ये किया था. And we have already talked about that communication has been established on walkie-talkie, and also the supplements, food, oxygen are delivered through the pipe. Who is PRS Oberoi? प्रवेश ये कौन है ओबेरॉय? PRS Oberoi. I think would be a businessman of Oberoi Group. हाँ मतलब वही बात है कि ओबेरॉय ग्रुप जो फेमस होटल है, they provide luxury facility all around the globe. और जैसे हम लोग 26/11 में देखे थे कि मुंबई में उन पर भी अटैक हुआ था. So I think he had died. He was very prominent and very important for increasing the India's soft power regarding to the Indian hospitality. तो ऐसे ओबराय ग्रुप हो गया, ताज हो गया, तो और भी ग्रुप्स है, अगर मानसी अगर बोल सकती है तो We have Lalit Hotels of Group. हाँ Then we have others there. Hayats. हाँ हयात. सही. तो बेसिकली ओबराय ग्रुप मेड रैपिड स्ट्राइड in luxury hotels and becoming the one of the top 3 hospitality chain in India. Basically, they have 32 luxury hotels, 2 river cruises ship in 7 countries. So basically, this is also very important part of the India soft power. सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं होता, ये सब होता है with the initiative taken by the private sector. गोल्डन पासपोर्ट है क्या मानसी? Basically जो tax haven countries हैं, they provide these kind of like options, golden passport and तो मतलब यहाँ पे कुछ additional incentives रहते हैं in order to attract more people towards those countries. Yes, yes. Basically, it is a passport based on investment. Investment कितने में हो सकता है? It can be $1 million, $2 million, etc. It is decided by the state, that state only. And they give investment so that to increase their tourism capability, infrastructure, etc. So basically, India's account for 10% of the global applicant for the golden passport. Major countries that gives golden passport are UAE, Singapore, etc. And many of the small countries where population is very small and they want more and more working population or investment in their country. तो UAE हो गया, सिंगापुर हो गया, साइप्रस हो गया, etc. तो गोल्डन पासपोर्ट इसको बोलते हैं. हम लोग ग्रीन सुनते हैं तो एक गोल्डन आ गया.
अब ये लिखा हुआ है द्वारका ई वे लैंड केस ऑफिसर्स से बेड टू मेलिंग मी चीफ सेक्रेटरी complaint said remove him from post vigilance reported I think it is going on case प्रवेश आपको पता है स्पेसिफिक केस के बारे में No, a little I know that the Dwarka ठीक है Expressway हाँ land इसमें दिया हुआ expropriation case is all about. basically according to this vigilance department senior officers of the vigilance department the including the chief secretary to undervalue the sale of scam at 302 crore when the actual compensation award would have been resulted in illicit gain of 850 crore to the beneficiary तो बेसिकली वो जो लैंड है उनका वैल्यू कम करके दिया गया और जो एक्स्ट्रा पैसा है जो है वो पता नहीं कहाँ गया तो इस पर बात हो रहा है कि इट नहीं ऑल्सो कौशिक, स्टेट्स शायद दैट इसमें ये ऐसा है कि जितना लैंड का वैल्यू है उसको उसे कम डबल कर दिया या गया ट्रिपल करके दिखाया गया है, और जो लैंड का असली वैल्यू था उससे ऊपर 500 600 करोड़ रुपए आपस में बांटे गए हैं। हाँ एंड ऑल्सो स्टेटेड विजिलेंस डिपार्टमेंट इंक्वायरी हैड नॉट एग्जामिन्ड हाउ बेनिफिशियरी परचेज लैंड इन बामोली विलेज एट ओनली मामनोली 7% विलेज। ऑफ it बोलते it is not only a case of corruption but it might involve money laundering as well as fit for investigation by ED under PMLA 2002 तो रिकमेंडेशन और द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट दिस बोथ सीनियर IAS ऑफिसर तो बेसिकली हम लोग भी आंसर जब लिखते हैं एथिक्स में तो हमें रिकमेंड करना चाहिए प्रवेश हम्म। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग हम्म। ठीक स्मॉग So that was गन an स्प्रे example, वाटर Oshik, that was an example how the tulip gardens are being constructed by the municipalities at different locations, and on the same lines of the nursery from where the people can buy, these kinds of plants, and it can leads to afforestation in the city and create the green lungs. यस This is an example of smog gun spray water as a part of the Delhi government drive to control pollution level. All are temporary measures. Secondary aerosol, we have already talked about. The primary aerosol are those which contributes to the pollution. Secondary are those which react in the air and then contributes to the pollution. So, on World Diabetes Day, AIM Delhi have started a free insulin distribution service Tuesday. According to the official, free insulin vial will be provided to poor patients with diabetic prescribed insulin from any OPD. वैसे एक दिन का है कि स्टार्ट से वैसे हमेशा के नहीं, लिए एक ही दिन है, एक ही दिन वही तो 9 AM to 5 PM. So this is something regarding Jharkhand, Oshik. You can yes. just skim through what it is all about. Basically, Prime Minister have flagged off the Viksit Bharat Sankalp Yatra to ensure the saturation of flagship government scheme from the land of Lord Birsa Munda. Lord Birsa Munda, the land of yes, initiative taken by the government to reach the benefits of all scheme to every district. So under which the Jharkhand will get approximately 7,200 crore project development, 100% electrification of railways for faster movement of train, reducing of carbon footprint according to the self-sustainable development goal 2030. Then dual gauging. The dual gauging क्या है, प्रवेश? Yeah, I think dual gauging, which simply means Dual double decker trains. नहीं dual gauging नहीं डबल डुअल गॉगिंग होता है बेसिकली जो ट्रेन का जो ट्रैक का जो डिस्टेंस होता है ना इट इज़ 1.6 किलोमीटर तो उससे एक फ़ायदा होता है कि आप हाई स्पीड रेलवे कर सकते हो तो
schedule. No, we have to exactly look what are the Your voice is not audible. exact thing Permanent campus for the going IIM, IIT Ahmedabad, IIT and IIM Dhanbad. Then 4-lane road, faster movement of minerals, 4-lane road, and new educational administrative building for IIT. Kaushik, can you All tell these are one most important and famous thing for which Jharkhand is known? Like Jharkhand is known for what? Which can be the most popular thing according to you? Jharkhand is known for Birsa Munda. It is known for uh, Tata Nagar, Tata Steel, first iron industry still in India, and iron mines. Basically, Okay. it also has uranium mines also. Okay, uranium is also found. And can you name the names of like the iron ore mines? Like, Iron ore. This is Raniganj, etc. One it is there. Then most of the mines are even drawn from the Odisha, also nearby Odisha. okay, And regarding the uranium mine, it is basically Jadugoda mine. okay. Or do we get gold Kaushik, also can you in Jharkhand? Hello. Yes, Ashik. हाँ नहीं मानसी मानसी आप पूछ लो फिर प्रवेश उसके मैं बाद ये पूछ रही थी कि do we also get gold in Jharkhand? gold mining can be there, I think, but it is not a very prominent. It can be mined in a very small part. Okay. It is very lesser material in Jharkhand. Jaishankar and Cameron. David Cameron, basically ex prime minister. ब्रिटिश होम सेक्रेटरी हाँ वही तो नाम उसका फोटो अलग है. Ex prime minister of Britain and also the currently foreign secretary of Britain. So they discuss about the West Asia conflict between Israel and Palestine, Ukraine conflict with Russia, and Indo-Pacific. तो अभी 3 एरियाज जहाँ पर ये इशू है, तो सबका बात हो रहा है अभी और पूछा जाए तो. They are also talking about the FTA agreement between India and UK. So what are the issues in FTA, Pravesh, if you can answer? सॉरी आशिक What are the current issues with regard to FTA, free trade agreement between India and UK? No, I can tell. First, it is okay, Pravesh. I think we have first is the rule of origin and IPR issue. Yes. Then we have banking and insurance sector में liberalization issue, liberalization of norms, and third is the Goa मतलब beverages so and electric vehicles. So these are some prominent issues between India and UK. Okay, I will add. Okay, Mansi, you can add. Then I will. नहीं ठीक है, you can go ahead. मेरे को यही बस बोलना था. हाँ, उसके बाद 3 एरियाज है. पहला वीजा टू द स्टूडेंट्स, more collaboration between the universities of UK and India. Then third is the synchronization in foreign policy with respect to the Quad, because UK and USA is currently in partnership with Australia regarding the AUKUS agreement. So India is also trying to get into the agreement with regarding to the nuclear submarine, etc. Defense agreement. So do you Then have any fourth, differences on this, Ashik? Like if India is not a member हाँ of डिफरेंस AUKUS, so क्या मतलब कि differences है? क्या चीज़ें मतलब मैं कह रही ऑकस हूँ में नहीं आपने होने जैसे से. अभी जो कंसर्न आपने हाईलाइट किया कि सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए फॉरेन पॉलिसी में, सिंस इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ ऑकस, तो इंडिया और यूके के बीच में उसके ऊपर क्या इशू है? इंडिया के सिर्फ में एक ही इशू है कि
most of the developed countries जैसे UK and US, they want basically monopoly over the technology aspect, like for example nuclear submarine या aircraft building etc, and even also the engine of the aircraft. तो जो इंडिया का पर्सपेक्टिव रहा है कि आप ट्रांसफर टेक्नोलॉजी करिए, लेकिन वो मानते नहीं, तो ये डिफरेंस है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया, उनको पता है कि वो छोटा कंट्री है, वो लॉन्ग टर्म में ग्लोबल पावर बन नहीं सकता, तो उनके साथ आप कर सकते हैं ऑकस, लेकिन इंडिया के साथ नहीं कर सकते। तो ये है मेजर डिफरेंस, ये इंडिया हमेशा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मांगता है हर बार। दाल रोटी इन्फ्लेशन, तो बेसिकली RBI गवर्नर has said that consumer price index remains vulnerable to the recurring overlapping food price shocks. It should really worry the RBI, because next year is election year, and the inflation in the cereals and pulses, in other words dal and roti, oh basically it is talking about the cereal and pulses inflation, that is increasing due to the mismatch in the aim of the productivity of production of the cereals and pulses, and also the global value prices। साथ ही साथ एल नीनो इफेक्ट भी हो रहा है और इरेटिक रेनफॉल के कारण भी। These are the reason। Arms and man and AI, India must help the global rules on responsible military use of AI। So we have talked about the Bedford Convention, where 28 countries have signed for the regulation of AI. India should include the AI in military doctrine, but as well as India should use AI in a very cautious approach, in a very responsible and accountable manner, so that AI cannot determine the uses of the machine against the people या फिर against the enemy। There has to be some form of human control over the AI। वैसे पेंटागन का भी लिया गया एग्जांपल यहाँ पर कि they have also adopted the data analytics artificial intelligence to generate decision advantage from the boardroom to battlefield। So basically AI is helping to make humans, that is general, administrator, even the army commander, to make a better decision in the boardroom। They can be used for manipulation as well। तो उसको कंट्रोल करने के लिए ह्यूमन एलिमेंट होना जरूरी है, ये एक एरिया हो सकता है। देन AI कैन बी यूज्ड for the part of the innovation। For example, China is using that। China has put AI as a center part of intelligent sized LA, that is PLA, that is People's Liberation Army, and is using AI for the various purposes such as logistic, unmanned system, combat surveillance, etc। So basically both countries are using it, both countries are integrating AI with its military command, but for India it has to use a very cautious role in it। तो इसी का बात हो रहा है कि AI should be important for the part of the India defense plan, but as well as India should regulate it and India should control it। तो ये ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू है इसका आर्टिकल का। लिखा हुआ ना कि it's working like-minded nation on the responsible military use of AI, ensuring that human remains in the loop while using the autonomous weapon। सिर्फ कंप्यूटर के हिसाब से आप फिर वेपन्स को चला नहीं सकते हो, ह्यूमन एलिमेंट आना जरूरी है, क्योंकि अगर कंप्यूटर के हिसाब से चला सकते हो तो आई थिंक it is prone to disaster। For example, if there is technical malfunctioning in the radar, then the radar can detect the incoming of the missile and they can use automatic restart of the missile। So this can lead to the fighter war। तो एंड इवन इसलिए यहाँ पे मतलब जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है वो भी दैट शुड आल्सो ह्यूमन रिमेन को होना चाहिए। ऑफ ह्यूमंस ओनली। जैसे किलर रोबोट के एग्जांपल ये हुआ, वायलेट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ ऑफ वॉर एंड रेज फंडामेंटल एथिकल क्वेश्चन। तो इसका डिसीजन कौन लेगा, ह्यूमन लेगा कि मशीन लेगा? सिमिलर इज विद द टेस्ला व्हीकल, हर चीज में तो ह्यूमन एलिमेंट होना ही चाहिए हर जगह। तो इसी की बात।
9 things to do for clean air. अब देखते हैं कि ये क्या बोलते हैं. Basically, it is talking about the poor air, which is amounting to the 7 lakh crore economic loss. ठीक. And it is leading to the premature death of 1.6 million Indian in 2019. Prerna, you can take up these data. Air pollution is system problem cutting across the state and regional boundary, rural, urban, etc. हर जगह है, and we should address it. अब कैसे किया जाए? तो पहला है कि एक्नॉलेज करना चाहिए कि ये ह्यूमन इंड्यूस्ड प्रॉब्लम है. सेकंड इज वी हैव टू रियलाइज द मोस्ट वल्नरेबल लाइक चिल्ड्रन एंड ओल्डर पॉपुलेशन, रूरल कम्युनिटी, urban poor, etc. Then we have to take an example from the cities like Beijing, Mexico cities, even London, which was facing worse air pollution than we are facing now. But they have improved a lot, so we can learn from them. कैसे उन्होंने switch किया from diesel to CNG, public transportation, etc. अब यहाँ पर दिया हुआ है कि what we need to do. Basically, we need an integrated approach. वैल्यू चेन में आप कंजम्पशन कम करो, रिसाइकलिंग ऑफ गुड्स, 3R इकोनॉमी को बढ़ाओ. That is, this will lead to the limiting of emission from the coal fire plant, brick kiln, garbage burning, etc. Then we need to limit the crop residue burning by implementation like shift to water intensive crop. ऐसे हम लोग पराली बर्निंग की बात करते हैं, स्टबल बर्निंग की बात करते हैं, उसमें लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप मिलेट्स का बात कर सकते हैं, या फिर मूविंग अवे फ्रॉम द वीट राइस साइकिल, वो बात किया हुआ है जो हम लोग बात करते ही है. और अदर ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट सच एज टीमिंग, हार्वेस्टिंग, बेलिंग प्रैक्टिसेस एंड बिल्डिंग अ वाइडर ईयर लॉन्ग मार्केट फॉर स्ट्रॉ, तभी जाकर ये स्टबल बर्निंग कम हो सकता है. तो इंसेंटिव देना पड़ेगा, लोकल गवर्नेंस मैकेनिज्म कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा. देन देयर शुड बी affordable green urban public transportation such as in Singapore, Hong Kong, etc. It will lead to creation of more jobs. And this one, transportation of a use of private two-wheelers, carpooling, etc. इसको promote कर सकते हैं. That is, next is electrification of building, vehicle, production of process. Fourth is airshed approach. तो airshed approach हमने पढ़े थे 2-3 दिन पहले, वो भी यूज कर सकते हैं. That is addressing the pollution sources and impact. Now we can take up in the next session. Mansi, you can share. Okay.